ना. Please mark your attendance, everybody. Mark your attendance. सर खुला नहीं है लिंक सर। Mark your attendance. Link is not. सर लिंक एक्टिव नहीं है। हेलो हेलो सर। हेलो सर। Okay, now you can mark your attendance. Okay, so last class we were at
Tell me where we have left the class. Simply we are going through the construction and symbol of your transistor. And we have seen when it was discovered, okay, and the symbol and the structure of your transistor, right? Then we have seen the type of transistor in BJT, bipolar junction transistor, okay. Now, what we are going to do today, we'll understand how these transistors are working, okay. So, first of all, see, this was the, okay, symbol for NPN and PNP, okay. We have two type of transistor, NPN and PNP. So this is PNP and this is NPN. So this was the symbol of your transistor, okay. So what is the basic operations? No, we have to understand. We have discussed these things for the construction point of view. The doping of your emitter and base and collector are not same. They are different, okay, with each other. So they are different with the each others, okay. So and the size of the and thickness of the base emitter current is also base emitter and collector is also different, okay. Now if we see the quantitatively, then we have few points, okay. So BJT consists of two back-to-back PN junction that we have seen. If we have two PN junction, if we connect back to back, then that structure is going to be formed as a transistor, okay. And the middle region is base region is very thin as compared to the emitter. This is emitter, this is base, and this is collector. So this region is very thin, okay, as compared to the emitter and collector, okay. So basically, carrier injected from here, look from the collector side, and this is very lightly doped, okay. This base region is very lightly doped. So if we consider this is N and this is P and this is again N, so carrier are injected from here, means free electron is going to be injected from this side, okay, and it will cross this base junction is very thin. Although this is P type, so a small portion of your electrons is going to recombine with this, okay, but very small, okay, 2% if we say. Rest of that is going to be cross this junction and will go into the collector region, okay. That's why the name is collector. Everything what is coming from here is going to be collected by the collector terminal. So this is how your transistor is going to be functioned, okay. So carrier are injected from base from the emitter, okay, to into the base from the emitter, okay. Now we have discussed these things because the base of your transistor is very thin, so very lightly electrons is going to be recombined with the holes over there, because in P type majority carrier is holes, so they will recombine but very less, okay, because your base is very thin. ऐसा कंस्ट्रक्शन में बनाया गया है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir.
अरे सब सो गया क्या? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब कोई बोल ही नहीं रहा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो? यस सर। हाँ हाँ सर। आ रही है सर। हेलो सर, लगता है सर को आवाज नहीं जा रहा है क्या हम लोग? सर आपकी आवाज आ रही है सर। राजीव, अरुण, राज। यस सर। रोनित, राज। यस सर। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। सर बोल तो रहे हैं सर। इधर से बोल रहे सर हम लोग। इधर कोई आवाज नहीं आ रही। मैसेज कुछ तो भी जा नहीं रहा हो। सुनाई दे। ओके, अभी बोलो तो। हेलो सर। हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रही। यस सर। So any doubt in this? नो सर। नो सर। Okay, so basically, what is the takeaway from here? Just remind two things. Okay, transistor का structure याद करो. Okay, what we have: base, sorry, emitter, base and collector. That means transistor is a three-terminal device. है ना? It is having base, sorry, emitter, base and collector regions. Okay. And if we look about the construction point of view, so every region are having differently doped and different in size. Okay. Then we have to look about the circuit symbol. Okay. How you are representing transistor in a circuit. Okay. ठीक है? ये चीज, इतनी चीज याद रखने का है। और इसका इन्वेंशन कौन किया था? कौन किया था इन्वेंशन ट्रांजिस्टर का? सर नेम याद नहीं है। विलियम शॉकली and John D. Barden. Okay, near about ठीक है सर। 1948. याद रखने का है, ये इसलिए याद रखने का है कि वो बहुत बड़ा काम किए हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ओके, ये ट्रांजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ अभी इलेक्ट्रॉनिक जितना भी आप देख रहे हो, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर ही है. आई विल लेट यू सर नो. विलियम शॉकली और जॉन डी, क्या चीज था बार्डेन. लास्ट में उनका? बार्डेन, ठीक है। ठीक है, ये जानना चाहिए क्योंकि जो डिस्कवरी करते हैं या जो किए हैं, जो बनाए हैं, उनका नाम जानना चाहिए. ठीक है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. ओके, कि वो कर पाए तो हम क्यों नहीं. ठीक है ना? तो ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग. ओके, सो इफ you have and please let me know today if you are free. both I am asking for the both class, मतलब सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए है. आप आज फ्री हो किसी भी टाइम? नहीं पता सर, क्लास के 5-10 मिनट पहले हम लोग को लिंक में बोल नहीं सकते सर। ओके, चलो कोई नहीं. ओके, लेट अस गो अहेड. ओके,
So and one thing, ट्रांजिस्टर काम क्या करता है? For what they have made this transistor? बताए थे क्लास में, एम्प्लीफिकेशन। क्या? एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एंड स्विचिंग। ये स्विच की तरह काम करता है और एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ओके, द मेन एंड ब्रॉडर use of your transistor is like a switch, and it is used in the switching or in the amplification work. Okay, so what was the amplification? Increasing the strength of any signal without distorting its original shape. Suppose this is amplifier, okay, and this is the input of the amplifier and this is the output of the amplifier. Inside amplifier there are so many component used for building it, but अगर आप ब्लॉक डायग्राम में देखो, सपोज एक एम्पलीफायर, आप यहाँ पे एक इनपुट दी, ठीक है, जिसका सपोज ये 2 मिली वोल्ट है, ओके, स्ट्रेंथ मैक्सिमम वोल्टेज इसकी। ये एम्पलीफिकेशन से एम्पलीफायर से क्रॉस होने के बाद, ओके, इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। अभी सपोज ये 2 वोल्ट हो गए, ओके, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हुआ। जैसा साइनसोइडल इनपुट दिए थे वैसा ही साइनसोइडल आउटपुट मेरे पास आया। तो दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन और एम्पलीफायर। इफ शेप इज चेंज देन it's not amplification, although it's amplified the signal, but this is distorted one, so this is not a faithful amplification if your input signal shape will have some distortion. Okay, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हमारे लिए क्या काम करता है? एम्पलीफायर की तरह काम करता है, मतलब एम्पलीफाई करता है और स्विचिंग करता है, ठीक है। ओके सर कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है? कैसे एम्पलीफाई कर देता है सर? उसमें क्या रहा, मतलब सर सिर्फ कैरियर्स की वजह से वो हो जाता है या फिर किसी और तरह से होता है उसके अंदर? नहीं, वी विल सी। ओके, कुछ नहीं है, Okay, sir. जस्ट लो रेजिस्टेंस एरिया से पास, मतलब लो रेजिस्टेंस एरिया से इनपुट होता है और हाई रेजिस्टेंस एरिया से वही सिग्नल पास होता है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, द ड्रॉप इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। ओके, Yes. so if you pass 2 volt 2 millivolt through a low resistance, and if you collect that 2 volt into the high resistance region, your voltage level is going to be changed. Okay, so we will see. Yes, sir. Okay, we will see. Right now we'll try to understand the working of this. Okay, I'm taking little bit time so that you can feel comfortable in this. Okay, because your background is not in electronics. So if you try to understand the analogy of your transistor, then it's like a एक नल है, उसके थ्रू पानी आ रहा है। If you try to understand, then if जो नल में जो टैपिंग लगा है, if you control this, then you can control the flow of water. Carriers, sir. है ना? Yes, sir. Okay, so if you relate this analogy to the your transistor, then it would be like the same thing. Okay, this is base, this is ammeter, and this is collector. Now look this. Okay, so this is, if you consider as a ammeter, and this is the collector. यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, बेस रीजन क्या करेगा, कितना पानी फ्लो होगा उसको वो कंट्रोल कर सकता है ना। मीन्स if you control the base region, then we can control the how much amount, yeah, how
much current is going to flow from emitter to collector. Okay, so this is the controlling. Your base is what? A controlling terminal or controlling region in the transistor. Okay, so transistor is called as a current control device. Okay, if you control the base current, then you can control the flow of current into the transistor. Okay, Yes, sir. like that. Okay, सपोज इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है. ओके, करंट इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक बैरियर टाइप का चीज है जो कि हम इसको अगर पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा, इधर से पानी आने लगेगा, है ना, फ्लो होगा, लाइक दैट. ओके, यहाँ जो डायरेक्शन है सर कलेक्टर से एमीटर के तरफ दिखा रहा है. हाँ बाबू, क्योंकि करंट जो इलेक्ट्रॉन है एमिटर टू इधर फ्लो होता है ना, तो करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा ना. हाँ सर, ठीक है. ओके, हाँ सर. now we'll understand the next. This is the main symbol. Okay, circuit symbol for that. Okay, so generally current is going to flow from collector terminal to emitter terminal. Now if we control this current, then we can control this whole line. Okay, so this is very, very important. So this is how your circuit symbol will look like. Okay, so this is base, emitter. Okay, this is your emitter, base and collector, and see the doping. Okay, doping level is much, सबसे हायर किस में होगा? एमिटर में होगा, उसके बाद कलेक्टर में, और सबसे कम बेस में. अगर विड्थ वाइज देखो तो सबसे ज्यादा चौड़ा आपका कलेक्टर होगा, उसके बाद एमिटर होगा और फिर बेस होगा. ओके, if you talk about diode analogy, then like this, if we connect, then it's going to be PNP, and if we connect like this, then it is going to be NPN. Okay, now if we see or mark your voltage label, okay, then this is if current is flowing, this is PNP. Okay, so take the example of NPN. Same analogy is going to be happen for PNP also. Okay, so the current flowing through emitter we are calling is at IE. Okay, so current flowing through the collector terminal we are denoting as IC, and current flowing through the base terminal we are denoting as IB. Okay, so the voltage drop across base terminal to emitter terminal is called as a VBE. Okay, base to emitter voltage. Okay, इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, उसको पहले लिखते हैं. सपोज दो टर्मिनल है, ओके, इसके बीच का हमको वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है. सपोज ये बी है और ये ई है. ओके, तो ये दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप हमको डिनोट करना है, तो हम क्या लिखे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम लिखेंगे VBE. ओके, मतलब जो हायर पोटेंशियल पे है उसको पहले नोटेशन में रखें. ओके, सो लाइक दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग. यहाँ पे देखो, voltage drop between base to collector, we are representing this as a VBC. okay, इसी तरह से एमिटर टू कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम VCE से. ओके, ये जस्ट इंफॉर्मेशन
आपका काम आएगा आगे के सर्किट्स में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? If we see the diagram, then in this diagram there are two junction formed. Okay, इसको हम बोलेंगे जंक्शन 1 एंड इसको बोलेंगे जंक्शन 2। ओके, और इस जंक्शन को बोलेंगे एमिटर टू बेस जंक्शन। ओके, एमिटर टू बेस जंक्शन, और इसको बोलेंगे बेस टू कलेक्टर जंक्शन। ओके, दो जंक्शन है, J2 है, J1। क्लियर है यहां तक सबको? Okay, now we'll understand the working of your transistor. Okay, try to understand the working of your transistor. So for that, what we have to do, so erase next page. For that, what we will have to do, suppose this is our transistor. Okay, base, emitter and collector. Now to understand the working of this, as we have discussed earlier also, maybe this junction, the first junction J1 should be in forward bias. Okay, and the second junction should be in reverse bias. Okay, so we'll make this. So this is N and this is P and this is again N. So making this junction as a forward bias, what we have to do, we'll have to apply some potential. Okay, so this is N, so we have to connect negative terminal of battery with the N side and positive one with the base. So now this junction is in forward bias. Okay, so same as for this junction, what we have to do, this is base and this is P type, so you have to connect positive terminal. No, because we have to make this as a reverse bias. Okay, so this is P, so we'll connect negative terminal and we connect positive terminal with the N side. Okay, now we have made our first junction, junction J1 in forward bias and junction J2 in reverse bias. Okay, and इसका नाम क्या होगा? What will be the name of this potential? बोलो। कौन सा सर? लेफ्ट साइड वाला? हाँ, ये पोटेंशियल सर वो इमीटर बेस पोटेंशियल, VEB। VEB की B सर EB, इमीटर बेस। एमिटर बेस। यस सर। और ये वाला एमीटर सर, कलेक्टर बेस। CB। अभी आपको एक चीज बताए थे कि जो हायर पोटेंशियल पे रहेगा उसका पहले लिखेंगे, बताए थे ना? इसमें हायर पोटेंशियल पे कौन है? ये दो टर्मिनल में बेस टर्मिनल पॉजिटिव पे है ना? यस। VBE होगा ना,
Okay. Yes, sir. ठीक है, मतलब सर पॉजिटिव हायर सर मतलब पॉजिटिव जिससे कनेक्टेड रहेगा वो हायर टर्मिनल पे है ना? हाँ हाँ ठीक हायर है। पोटेंशियल है. Yes, ओके sir. ठीक है. So this is how your transistor is going to be initially configured. Okay, so what now if we see when we provide this voltage, what will happen? Electron is going to be injected in this region. Okay, so many electron is going to in this region. Okay, initially, because this is forward bias, so electron is coming in this circuit, is going to injected in emitter region. अभी emitter region में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो क्या है इसके ये जो जंक्शन है बहुत थिन है, बहुत ज्यादा थिन. ओके, क्या होगा, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा, राइट. सारा इलेक्ट्रॉन इस रीजन से बेस रीजन में आ जाए. अभी बेस है पी टाइप. ओके, so small amount of your electron is going to be recombined with this. Okay, और others क्या हो जाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर थ्रू हो जाएगा. ओके, यहाँ पे बहुत छोटा डिप्लेशन रीजन बनेगा. ओके, because of number of electron is much higher in this region, what will happen, this junction is going to break and all the electron will going to pass this region. Only 2% of is going to be recombined in this, and rest of that is going to pass in this region, and it will go like that. Okay, so this is how your transistor will start the working. अगर यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ से यहाँ तक करंट भी फ्लो होने लगा, जो रिकम्बाइन हुआ इधर कुछ आप तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so what will happen, due to that there is a flow of current. ओके, जो रिकम्बाइन हो गया, जो जितना पोर्शन और जितना इलेक्ट्रॉन रह गया इसमें इस रीजन में. ओके, due to that there is a flow of current, very small little current is going to flow. Okay, and that is called as IB. Okay, and this is this current, because electrons is flowing through this, so this current is known as IE if the region is emitter. If the region is collector, then this current is called as IC. Okay, okay, so that means when the VE is in forward bias, okay, it decreases the barrier potential. Okay, here. Okay, it decreases the barrier potential, hence the electron start flowing from emitter to base. Okay, emitter to base. The base region is very thin and it is lightly doped when compared with the other region. Hence, it consists of a very small number of holes. The electrons that are flowing from the emitter will recombine with the holes present in the base region and start to flow out of the base region in the form of base current. Okay. Okay. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है वो रिकम्बाइन हो जाएगा. Okay, in this region, and what will happen, whatever amount of the electron has recombined in this region will leads to leave this region. Okay, and due to that there is a flow of current that is called as base current. Okay, clear? Yes, sir. A large number of electrons that left from base region and crosses to the collector junction, near to the collector junction,
and that all the electron is going to be collected by the collector region, and due to this there is a flow of current that is called as IC. Okay, so if you apply a Kirchhoff's law in this, then emitter current is going to be equals to IB plus IC. Okay, this is very very important. अगर आप किरचॉफ्स लॉ को पढ़े होगे तो क्या था, the summation of all the current at any node is going to be 0, है ना, जितना इन हो रहा है उतना ही आउट होगा. ओके, सो अगर ये IE है सपोज मान लेते हैं, और ये IB है और ये IC है, तो IE क्या होगा, ये करंट क्या होगा, ये दोनों समेशन के बराबर होगा, है ना. यस सर. Okay, so IE is going to be IB plus IC. क्लियर है? यस सर. सर इसमें हम लोग एमीटर में इंजेक्ट कर रहे हैं जो भी कैरियर है, ठीक है, और वो बेस से होते हुए कलेक्टर तरफ मूव कर रहा है, तो करंट तो सर इधर साइड में मूव करना चाहिए, तो जस्ट अपोजिट इसके. हाँ, अपोजिट ही तो मूव कर रहा है. अच्छा, अपोजिट ही है, ठीक है सर. अपोजिट ही तो मूव कर रहा है. सपोज इफ इट गो into the circuit symbol, okay, see, current is flowing like this. This is IE, okay, and this is IC, and this is your IB. Okay, so if you see, this current is equals to what, this current plus this current. यस सर, IC प्लस IB. Okay, यस सर. okay, so see here, your IE is IC, IB plus IC. okay, लिखने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा माउस ठीक से चल नहीं रहा. okay, so IB is very very small. IB is very very small, near about 2% was there. okay, तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो हमारा IC क्या है, नियरली इक्वल्स टू IE. okay, this is also very very important consideration. okay, your IC is nearly equals to IE. clear? यस सर. Now the configuration of BJT. okay. Configuration of BJT. So how you are going to configure? ऐसा हो सकता है ना कि अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया जो नॉर्मल वे में ऐसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है. ठीक है, अभी आप बोल सकते हो सर ये पॉजिटिव हो सकता है, ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो सकता है, ये जंक्शन है ना. और कितना वे में इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब ये फॉरवर्ड बायस, सेकेंड जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, एक कंडीशन हुआ. दूसरा कंडीशन ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस जिसमें ये काम करता है. ओके, और तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस, और ये रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस. ओके, so these are the possibility in which we can give the potential or we can bias our transistor like this. okay, but for working of a transistor like an amplifier or like a switch, we have to model your input junction, matlab junction J1 should be in forward bias and junction J2 should be in reverse bias. okay, now if we consider as a configuration, okay, so we have three type of configuration called as common base, common emitter and common collector. In the next class
onwards, we'll see these configuration. Then we'll see the input and output characteristics of